Hello, hi, welcome again. This would be stream number 181 of my 365 days streaming challenge, and I'm continuing with the website making series, live website making series. In the morning, I did the Hollow Knight playthrough stream. It was good enough, I think. Not really, but I mean, I needed to do it to continue the habit. So sorry. Yeah, we did start again after 2 days. Like, I wasn't able to stream for 2 days, and then I am doing it now, and we have already done one in the morning. This would be another one, and hopefully there will be one more in the evening, or at least night. So yeah, that's the plan. Right now we will be working on my website, but before that I saw something interesting today. I didn't know this thing, so I will show that thing to you guys because it's interesting to me. Let me show you, I guess. So this is something new that I'm looking at, and hopefully I think we will continue to try it and do it. As you could see, YouTube now supports vertical stream at the same time, and now we are creating Inception. But as you can see, now YouTube supports vertical stream as well, and it is automatically cropped. Obviously we can do like a separate vertical stream with our proper OBS systems and stuff, but this looks fine too. And if you like strategically create your scenes and stuff, then you will always be in the center, or at least your main elements that you would want in your stream to be visible. You can use all of them in the center, and that will look good on both the horizontal scene and the vertical scene. So obviously this is something new that I just tried, and it looks good, I think. Obviously it's not centered right now, this desktop thing, and it would not be possible to do that, but in certain situations it would be helpful. And plus the other benefit, if the scene doesn't look good, still you have one more benefit. Okay, sorry about the abrupt cut, and now the live should be working well, although I'm not so sure. I need to look at it to confirm that it is working. It should be working. We were talking about the live stream, new live stream aspect of the YouTube platform, and our stream kind of crashed. Okay, I think it is going good, but I still need to confirm. Our OBS just crashed. I'm not sure what made it crash, to be honest. Otherwise I would have fixed it. I have no idea. So yeah, I need to figure it out. I'm just checking the stream. Okay, it is working. Although I only see the horizontal stream right now. So will there be a vertical stream as well? Let's see. Okay, not really. Okay, I don't know how this will work. So this is what I'm talking about. We have both the horizontal and vertical stream option now with YouTube, and I don't think it's being encoded through the desktop. It's happening like within YouTube. So I'm not sure why this is going as loading icon right now, although we should focus on our website building stream, to be honest. But this is something interesting that I just noticed today, so I wanted to share before we start working on our thing. This looks great, I think. Not sure why this is not being displayed at the moment. I also couldn't verify that it is working or not working at the moment, but it should be, at least.
let's pause it because we will be working and I don't want to mess with the bandwidth available with my internet connection. It's not good anyway. So yeah, let's continue, I guess. I'll switch to the just chatting scene for a moment. And by the way, the vertical looks good if you are in the center. So if you want to stream on YouTube like both horizontal and vertical, this new feature seems interesting. All you have to do is create the most important things about your scene in the center. This is what I was talking about before the OBS crashed. And also, even if that's not possible, I think it's still going to be somewhat really helpful, because people will be reaching to your live stream with the vertical stream, and then if they will maximize the screen, I think they will land on your horizontal stream. So it would probably work for the stream promotion at least. So I think it's worth it. So do give it a try, I guess. And I didn't switch to the settings and stuff because I'm not sure what things would be there. Okay, I think we should continue now. I've already wasted about I don't know, 8 minutes. Let's get going with the website building stream, shall we? I'll switch to my browser and go to the website. And I do have some things to talk about before we start working on it. So if you remember, although even I don't remember, but maybe if you remember, we were not doing very well on this stream when I started with Divi, and because we went completely blind, I didn't look at any tutorials, documentations or anything. I just went into it and tried to create things, and I liked it kind of, but it wasn't the best in my opinion, the first experience. The second one was slightly better because we kind of delved into a little bit of tutorials. I wouldn't say we followed it, we looked at it, but I got some context or concept about the Divi builder, basically how things work on this particular builder and stuff. And that definitely helped on the second stream, where I think I streamed for like about 4 or 5 hours, where I was making the website. And this is the website that we were making at that time. And I did encounter a lot of errors, and I was also trying to find ways to get rid of the issues that we were facing. There were a lot of issues that we were facing, and hopefully we would be able to do better this time. I have looked at more tutorials and stuff, and I'm not going to follow them one by one, obviously. That will waste a lot of time. And this is something else that I realized in our 2 live website building stream, is that I should prepare the text and stuff and element beforehand to save your time. And that is the reason the website looks like this, although this page is almost completed, to be honest, but that's because I forgot about streaming. So what happened was, I opened the computer in the morning to work on it. Okay, the plan was to stream everything on this website, everything I'll do on this website, so that you guys can learn as well and see the complete process of me creating this website and everything in it, the functionality aspect as well, and the business aspect as well. And I was about to explain everything to you guys, how my plans are, what my plans are, and how things will work out. And yeah, I wanted to show everything to you guys, but the next morning when I was supposed to stream the website building live session with this website, I forgot about it, because if you remember the last stream, the second one, I was unable to do some things on the Divi builder on the page, and that was bugging me a lot. So what happened was, the next day when I opened the computer, this page opened, okay, and immediately my mind switched to the solution mode. Okay, find the solution kind of mode, and I forgot about streaming completely. And then I started working on it, and eventually I did realize that okay, I needed to stream this, but it was already a little bit late, and I was also in the flow state kind of, so I didn't stop, and I kept creating things. And then I also decided
Okay, this is and this is also one of the reasons why I decided to do it, is because I saved a lot of time. Like for example, in the stream we took 4 hours and we couldn't create anything useful, significantly useful. There was so many things useful, I would say significantly useful, but when I wasn't streaming, I created this complete page in about like 40 minutes maybe max, and then I was fine tuning the page for about 2 hours maybe, and checking the responsiveness and stuff, like different devices and stuff. And I did want to create some things which didn't work out, so I used a little bit of custom code, but it should be easy. It's very basic, and also you can use some AI tools and stuff to create the same thing very easily. I will tell you how to do that, even if you don't know how to code or don't understand HTML, CSS and stuff like that. So yeah, that was one of the thing. And also one of the thing was the caching plugin that I used, Lightspeed caching, because I use Lightspeed server, by the way. Hostinger and Hostamara, both very good with Lightspeed server. Do check it out. I will provide the link in the description. And yeah, so that was the reason. And I used like extreme settings, whichever possible, without breaking the site. So my site was breaking obviously because of the caching plugin. So I needed to sort out the bugs, and I did that, which took like more than 5-6 hours. I don't even remember. It took like a lot of time. And the support team, yeah, we were supposed to talk about the support team, but before that I need to switch to the chatting screen, because I will open the mail. I think, let's see if I can show you guys. It was hilarious. So I wouldn't rate the support team well for the elegant themes. Sorry, the support team is not very good. I wouldn't say it's bad, but not good either, is my verdict. And I'm trying to find their email, if it's still there, or I don't remember if I deleted it, but they weren't like very helpful. I just don't want to show you guys things that would expose. Okay, I cannot do it. Like, I cannot show you the emails because it contains my own emails and stuff. So but I will tell you some things. So we already knew what could be the issue, right? When we were trying to create, I'm talking about the padding for the section. We can't go beyond a certain amount of padding for the section at the moment. And even if you like apply the padding margin and stuff, 0 pixel and stuff, it doesn't work for the width. You can sort it for the height, and there is like even setting option available in the theme customizer to do it. Even without the page builder you can do that, but there was no customization available for the width. So that was the thing I was trying to figure out, and it didn't work. And we started to chat with the support team because of that, and the response was hilarious. First of all, I think they asked me to provide remote access, and I did talk to them and explain the issue. I'm reading the email, even I don't remember all the steps, and that is the reason. I explained how it can be solved and what could be the exact issue. Then their reply was, if you have okay, their reply was this: if you have already confirmed, I think I can show you guys this one. Let me show you. Okay, I'll first confirm I have nothing on the window to hide. Okay, I think I can show you this. Okay, which one I was reading? I am worried a little bit because I may show you too many things. Okay, I think, okay, this one. If you have already confirmed the issue, okay, I will switch to the chatting scene. Okay, I'm just too worried about it, the email stuff. What if something opens or a new email appears or something? Yeah, so the message reply that I got from them, the team, is if you have already confirmed that the issue is due to caching plugin,
You can disable all the settings of the caching plugin and then enable them one by one. While checking the site after enabling each option to find which specific option is causing the issue, please share which option is it, and we can check it further. So that, I think this wasn't the response I am talking about. I think there was one response where they basically said solve it yourself. That that was the response, and mostly they behaved like that. For example, even in this one, they are asking me to solve it, they are not trying to help themselves. Basically, even when I explicitly said that I cannot do this, even then they were like, try this, try that. And I understand that they might be thinking, if we teach them, then maybe we don't have to like support everyone every time. But the thing is, not everyone will have time to do all these things, and that's one of the reason I don't like the support team very much. And it's not all bad, by the way. There was one more, I don't remember which one. So there was one more chat support, and one of the issue again. So they keep switching between agents, so you won't talk to the same agent all the time. It will keep changing, and you will probably have to explain things again and again. So that's another issue, and it's all email based, the support team, which is fine, to be honest. The only thing is I didn't like the support provided. Otherwise, I don't mind the email method of getting all the support, basically. So yeah, one of them explained things to me in a very detailed way, provided screenshots and stuff, how to solve the issue, and genuinely tried to help. So it's not all bad, obviously. That's my point, and I have to tell you guys this, it's not all bad. It may seem like that, but it's not. And if I had to rate the support team, by the way, I gave up. Let me collapse all the messages, then I will show you guys. We chatted a lot in the email, and eventually I gave up and thought, okay, let's forget about it. I will do everything myself, because they kind of ask you to do it anyway. So why not do it? Okay. I'm worried about showing something wrong, and that's why I will go quickly. As you can see, we had a lot of chat, including this one, and there's one more, I think, above, but I think I will show you guys something sensitive, so I'm not going to go up from here. So you can say that we chatted a lot, and all the messages are very detailed, by the way. I haven't opened them here, obviously. All of the messages are detailed, even I provided with the screenshots and stuff. But the support team was inadequate or not willing to engage to explicitly help you from their end, I think. And that is why, if I had to rate the Elegant Themes support team, and not just because of this, my overall experience with them, basically, I would say 2 star out of 5. 2 star out of 5. That would be my rating. 1 star for simply existing, because sometimes you don't even get support. In this case, there are people who would probably help you, so 1 star for that. And the 2nd star I gave it because there are some good support agents as well. Like I said, there was at least one of them. I talked to at least one of them, and there might be obviously more of them, and a lot more of them I don't really know, I can't know, but I do think like there are very good people as well in the support team, and that's the reason the 2nd star. And my overall rating for the support team would be 2 star out of 5, which is not very good, but it's better than having nothing, to be honest. So yeah, that's one of the things that I wanted to share. And now we move on to website making again. Even in this particular page, I think I had some things to talk to. One more thing that you might notice now is, okay, it's because of my face cam, you might not see it's behind my face cam.
let me see if I can turn it off. I think I had one shortcut here. Scams. Okay, it's not working. I have to rework on this. So it was supposed to turn off the face cams on my shortcut buttons. Basically, one of the buttons didn't work. I'll work on it later. So yeah, there's a captcha behind my face cam captcha thing, reCAPTCHA. So that's one thing that I added to avoid spam. And I don't remember exactly how much work we did during the first and second stream. So I will try to explain everything before we continue with the other stuff. So I'm simply loading the Divi builder, and I'll show you things that I did over here on this website. I should have talked about the menu first, but let's get going from this one. Then I'll talk to you guys about the other stuff. So one of the, I think we had this already. This is a hero section. Although I also discovered one more thing that I don't like about Divi Builder is because it's the thing that every time you add a element, any element to be honest, for some reason they always choose the H1 heading. I don't know why, which does not look good, very good for the SEO thing. If you know about SEO, then you know what I'm talking about. H1 should be your page's kind of title thing, title of your page type of thing. It shouldn't be like used too much on a single page, and that's the thing that happens if you create the website using Divi Builder and don't change the content of your website, the heading thing basically. I don't know why. You will always see them switching their text element, the heading at least, will always be H1. I don't know why. So if you don't look at it and don't change it, and you will create the entire website, then all of your element will have H1 tag for the heading, which does not look good for the SEO or hierarchy of your content. And that's one of the things that I didn't like about Divi. They should provide an option for you, or at least try to tell you, or allow you to choose allow you to choose, I guess. So that could have been done. I don't know how to like do it in a better way in terms of UI, but definitely not this way. I think it's hidden also, as you can see. You wouldn't realize working on it. Like for example, let's go to our text section. So you are adding text, and you may think that you just added a title text and nothing else, and you may assume that maybe it's div, maybe it's p element or something like that if you understand HTML, but actually it's H1. And not just for this, by the way, wherever you will add headings and stuff, it will always be H1, as you can see. That's one thing that I didn't like. And if you don't know, or you don't notice it, then it will be like your entire page will be made up with H1 tag, which I don't understand the choice by the Divi team. So yeah, that's one thing that I didn't like, and maybe you would want to fix it. I don't know. So that's one thing, and we were struggling to create the mobile version of this thing. I mean, it was there. By the way, this padding looks bad here, but actually it's not like this. I don't know why, but the responsive thing does not look exactly as the site will look on your device actually. So this is the thing that we couldn't do before. I did it. All you have to do is find the right section, like for example raw, and then you reverse it. For some reason it wasn't working that day. I don't remember why, but I fixed it by layout wrapping. So this wasn't enabled. We were trying this thing, layout direction, which is fine, but until and unless you have enabled these wrapping functionality as well, it won't work. So that was the reason it wasn't happening. And this section wasn't looking good because there were too many logos
vertically. I decided to keep it horizontal because it's not that important for me to show the logos on the mobile devices as well, and it's visible. It might not look visible in this case because you are looking in a desktop, basically a mobile preview on a desktop, and that's why you may not be able to identify the logos, but it looks good enough in the actual phone. I have tested it on my website as well, and I fixed the paddings and stuff for this element. I needed to center the button. I haven't done it for some reason. Let's do it now. You will go to alignment and then select center. That's it. I did some things like that, and then I want to create hover functionality for this one as well. I haven't tried it. We may try it later on. I did add this thing behind the scene, as you can see, although I will edit the image and the image itself and add it to the page later on. The reason is it was looking bad because of the floating image. On the web version of it, it looks good because there is this area which makes it look like it's sitting on this element, basically the photo. But on mobile device I have reversed it, and that's why it wasn't looking good. It was looking like it's floating. So to fix that, I added that background in that image, and in future I'll simply edit the image itself to look better and not floaty, and add that image over here. This image would be suitable for some other places. So I think we have covered everything that I needed to cover here. Oh, there's one more thing. I have added hover, as you can see, on these elements. These are columns, and by default you cannot do that easily on Divi. So what I'm talking about is, if you want your hover effect to work as expected, or as it is working right now, as you can see, you will need to add the shadow beforehand as well on the boxes. But what I wanted was not having the shadow at all. Like the boxes would be like this, and it will only appear, the shadow will only appear when I will hover over it. So that was the thing that I was trying to do, and it didn't work out with their hover functionality over here with the hover element. And some things are not supported in the hover element, by the way, so you have to figure it out. Sometimes even they will tell you that this function will not work or something like that. But yeah, not everything can be customized for hover effect on this particular website builder or theme builder, which is Divi. So that was one of the reasons. So I simply solved it with CSS, but it's not very complex. I think advanced. So all I did was, this is saying anchor ID. Okay, it's for the button. All I did was added like some CSS. Not here. I think I added it to the section element. Sorry, column element. I think, I don't remember. Okay, not here. Not here. I don't know why it's not showing, but okay, maybe blur element. I don't remember where I have added the CSS, but there is a custom CSS that I have added. हिंदी में कुछ बोलो भाई. अच्छा हाँ बोल सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में ही देखते हैं, इसलिए बोल रहा था. हाँ पर ठीक है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं. सो शैडो के लिए मैंने यहाँ पे CSS डाली है, ठीक है, पर वो अभी दिख नहीं रही मुझे. यहाँ पे ही CSS है, बेसिकली कस्टम CSS है, और मैंने कस्टम एट्रीब्यूट भी लगा रखा है जो कि क्लास है. अच्छा, ये सैम्पल में क्रिएट कर रखी है मैंने, यहाँ पे नहीं है, ये अभी याद आया मुझे. तो वो मैंने बना रखा है प्रीसेट में, इसलिए नहीं दिख रही थी. दिखाते हैं. रो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट तो कॉलम में होगी, कॉलम यस. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉलम प्रीसेट में बॉक्स शैडो होवर करके मैंने प्रीसेट बना रखा है, और यहीं पे होगी. तो यार, तो ये बेसिक CSS है जो मैंने ऐड करा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको CSS आनी चाहिए. आप सिंपली AI टूल वगैरह से भी बनवा सकते हो इजीली. बस यहाँ पे क्लास नेम जो है ये आपको याद रखना है. यहाँ पे जो क्लास नेम है, तो वो क्लास नेम लेके फिर उसको फिर एट्रीब्यूट में जाके यहाँ पे डाल देना है.
यहाँ पे एडमिन लेवल में कुछ भी डाल सकते हो, आपने अपने लिया है वो। एट्रीब्यूट नेम में क्लास होना चाहिए और एट्रीब्यूट वैल्यू में वही वैल्यू होना चाहिए जो हमने वहाँ पे कॉपी करा है। तो बस वही करके उसके बाद उसको सेव कर देना है एंड देन उसके बाद आपका होवर एलिमेंट काम कर रहा है। तो यही था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जब इसको मुझे रिप्लेस करना है ऑब्वियसली, ये यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे एक वीडियो रहेगी जो ट्रेलर टाइप होगी काइंड ऑफ, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें। और यहाँ पे मुझे होवर इफेक्ट बनाना है, बट मैं ना जल्दी से जल्दी लैंडिंग पेज तैयार करना चाहता हूँ ताकि हमारा फ्रीलांस वाला पेज रेडी हो जाए, लैंडिंग पेज, और हम जल्दी से जल्दी इस वेबसाइट से भी पैसे कमाने लगे। तो दो लाइक डन। अच्छा, क्या कर रहे हो भाई? हाँ, वेबसाइट बना रहा हूँ और उसी को दिखा रहा हूँ लोगों को बनाने के लिए। मेरा मतलब आई थिंक सुन के ही होगी, कर के ही होगी, मेरा भी ऑटोमेटिक हुआ तो मुझे नहीं पता। तो बस यही है। यहाँ पे आई थिंक मैंने सारा ही बता दिया। हाँ, उसके बाद एक बार जब मुझे लगा कि ओके ठीक है इतना बन गया है, तो उसके बाद मैंने फिर सबको सारे एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज़ करा कि सारे डिवाइसेस में अच्छा दिखे। ये जैसे कि टैबलेट और साथ में, और ये रहा हमारा मोबाइल वर्जन, तो सब में ठीक ही दिख रही है, मोबाइल वर्जन भी ठीक ही दिख रही है। तो ये हम कर देते हैं बंद, क्योंकि ये पेज में हम काम कर चुके हैं और सब में लिंक भी डाली हुई है बाय द वे, जो भी डाल सकते थे हमने। एग्जिट करता हूँ इसको, डिस्कार्ड एंड एग्जिट करूँगा। अभी हमने कुछ चेंज नहीं करा है। थंबनेल डिज़ाइनर हो गया, हाँ कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ एक्चुअली, और उसी को कर भी रहा हूँ। तो सेल भी करने का प्लान है, तो उससे मतलब थोड़ा काइंड ऑफ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, सीखने के लिए भी इजी होगी। तो मैं वही प्लान कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे थंबनेल टेम्पलेट्स बेचने का प्लान है, तो वो भी होने वाली है, और फ्रीलांस सर्विस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ थंबनेल डिज़ाइनिंग के लिए। तो देखता हूँ कैसे होता है। तो फिलहाल तो वही है। तो सबसे पहले तो लैंडिंग पेज हम थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी के लिए रेडी करना चाहते थे, इससे पहले कि हम अपना जो मेन मिशन था हमारा वो कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पोर्टफोलियो पेज पे ले जाएगी, पोर्टफोलियो या थंबनेल डिज़ाइन वाली टेम्पलेट में। और ये टेम्पलेट है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जो मैं बना के रखा हूँ एक जगह से मैनेज करने के लिए। ये अबाउट पेज है, इसमें भी काम करना बाकी है। और ये रहा लैंडिंग पेज जो मैं बना रहा था। तो ये भी कह सकते हो कि काफ़ी कुछ मैंने ऑलरेडी कर लिया, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे भी वही केस था कि रुका नहीं गया मेरे से, तो मैंने बना लिया। वेब जॉब करते हो क्या? नहीं, मेरा सारा ऑनलाइन ही है। तो फिर इसको मैं भी डिवी बिल्डर ओपन करता हूँ और फिर समझाता हूँ कि क्या क्या करा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाई आपको मतलब इस पे इंटरेस्ट है इसलिए बोल रहे हो, या हिंदी में बोलना, या फिर सिर्फ समझने के लिए? क्योंकि अगर मैं वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये डिवी बिल्डर के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश में ही करता हूँ वो, और तुमसे बात हिंदी में करता हूँ। ऐसा चलेगा क्या? क्योंकि मैं बाद में इसको कट करके ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, तो वो ट्यूटोरियल इंग्लिश में रहने वाली है। तो कुछ सेक्शन तो चलो हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कोई नहीं। मैं भी थंबनेल करता हूँ बट इंग्लिश वीक है। अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं बस वेबसाइट की चीज़ें जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब इंग्लिश में बोलूँगा, अदरवाइज़ तुमसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में ही मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करता रहूँगा। So okay, I also worked on this page as you can see, and this is something that I have done already, and I need to work on the form element a little bit, but that's it. I think this page is also ready, and this button, I don't think I have linked it anywhere at the moment. It's okay, it's linked to the form. So if you look at it, it's just a background element with background image and stuff that I have added. I think it's pattern. Yeah, polka dot pattern, and I have added the heading text here, and then there's a normal text element, and then I have made the button bigger by adding some paddings on the left and right and top and bottom, and this is there, this text is there for the FOMO effect. And I have talked about the cast, basically why I'm offering free thumbnails and stuff. And then right now these three are just images, but this will be a gallery sort of element where if someone will click on the image, it will pop up
and they will be able to look at the image like in a full window. And I need to design that. Okay, open lightbox. I don't have to do that actually. I can simply just enable this thing. फॉरेन क्लाइंट को हायर नहीं कर पा रहा हूँ. अच्छा, कर पाओगे क्या? ये इजी हो जाएगी, मतलब टाइम के साथ हो जाएगी. अभी जहाँ मैं ये वेबसाइट भी उसी के लिए बना रहा हूँ, फ्रीलांस क्लाइंट्स, मतलब ये पेज उसी के लिए है. तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो अगर मतलब डायरेक्टली बात नहीं कर सकते तो, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लिख के ही करनी है. करके फिर रख सकते हो, AI वगैरह भी चला सकते हो, उससे भी करके रख सकते हो. तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, मतलब कर सकते हो, चाहो तो ईजिली बना सकते हो. ऐसा कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है. Okay, so this is the landing page and I have enabled this element thing over here. By the way, you can save preset for everything. So for example, if I want to save preset for this image element module, then what I can do is simply click on this preset thing. We can create a new preset where I will, okay, let's do one thing. Okay, just one thing. I will save only this thing as a preset. First of all, open in lightbox, extend open in lightbox attribute. This is one thing, by the way, that is impressive on this particular builder, is something that, for example, we applied something over here, but I want that same settings to be applied over here as well. I can simply do that with the extend attribute. I selected image. I'll select the parent row, because this is one row element where all these thumbnails or image module exist. Extend all module. Okay. Content attribute image. Modify fill to expand image. I just want to do one thing actually. Let's find it. All module. Nope, image module only. We will change. I don't think we have the option actually, but let's see. Content attribute. Content attribute. Then we'll select image. Okay. Extend. Okay, it's not gonna work as you just saw. I cannot do all attribute. I was looking for an option that would allow to extend only this option, which should be possible. Let's say आप लाइव डेली करते हो क्या? करने की कोशिश कर रहा हूँ डेली करने की, लेकिन 2 दिन छूट गई थी, पर करने की कोशिश वही कर रहा हूँ. आज को 181 दिन हो गया, 365 दिन करना है. ये चैलेंज है मेरा खुद का, अपना इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को. हाँ, जैसे ये सब भी कर सकते हो. मैंने भी खुद बात कर पाऊँ लोगों से, कैमरे के पास आ पाऊँ, उसके लिए ये चैलेंज लिया था. तो मैं भी मतलब वीडियो वगैरह में कैमरे के सामने आने में अच्छा नहीं हूँ. तभी मैं बिहाइंड द सीन वेबसाइट वगैरह में काम करता था. वीडियोस वगैरह उतना नहीं बनाता मैं, क्योंकि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है कैमरा पे आना. तो उसके लिए मैंने ये चैलेंज लिया था कि प्रैक्टिस हो जाए. तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो. ओपन lightbox attribute to the parent element or parent element children. Parent element. Okay, parent row is parent section. Let's go with parent section. Parent row is the same thing, to be honest. All module, all element. No, we are doing it to specifically the image. Then we want the content attribute to extend. Okay, it won't work because it will also extend the image thing basically. So I have to do it manually or find a better way to do it later on. For now, let's just do it. So yeah, now these are lightbox, and if anyone clicks on these, it will pop up in a bigger window and people will be able to see full size. And these are only 3. I plan to add more, at least 6 maybe. And later on maybe we'll modify things. But for example, we will give the option to select the niche over here or topic,
and then they will see the thumbnail for that particular topic. For example, there will be a button for gaming, and if someone will click on gaming, then it will show gaming thumbnails. And similarly, auto, then they will see the car and bike related thumbnails, and tutorial, kind of this type of videos and stuff like that. Informative, maybe tutorial and informative. This is also one of the thumbnail that I've created, but I do need more thumbnails. For now, I think this is fine, and this form is also fine. I just need to test it that it is working, and we will be done. And I think it is working. I don't really know. Yeah, I do have to add some more elements. मैं डेली लाइव देखूंगा. अच्छा ठीक है, हाँ आ जाना, डेली करता हूँ. गेमिंग वाली स्ट्रीम भी करते हैं ऐसे ही मस्ती करने के लिए, और बीच बीच में काम वाली स्ट्रीम जिसमें थंबनेल बनाता हूँ एक में तो, और एक में ये वेबसाइट बनाता हूँ, तो वो भी स्ट्रीम कर रहा हूँ. तो हाँ, ज्वाइन कर सकते हो. So another section that I wanted to add over here can be added, but not now. I will explain why. Why the exit button is not working right now. I'll simply go back. The exit button is not working for some reason. So yeah, so the reason I am not adding more section right now, which I wanted to add, is because, let's go to home page to show that, because I will be adding this type of area over there, and it will all be related to the thumbnail. For example, this is WordPress template. This is touch portal, which is the shortcut keys on my tablet that I use to control this particular stream. That's there. There is one YouTube thumbnail templates area, but I would like to add 3 or 4 products that will only be about thumbnail making. That's the plan there, and that is why I haven't added it yet, because I don't have it yet. I will create the product first, and then we will display it over there. Instead of showing everything, we'll only focus on thumbnail products basically, and that will. So the plan is, even if someone doesn't buy the thumbnail or doesn't take the offering of free thumbnails, which I'm offering over here, they may want to buy the thumbnail package and do it themselves, create the thumbnail themselves, or even I can sell the tools and stuff with affiliate marketing. So that's also an option. And I think we are done here explaining things. I do want to create a lot of things right now, but I have no memory of the things that I wanted to do, and that is the reason I'm talking randomly. And I also want to chat with the viewer, and that's one of the reason I'm doing it. So for everyone who does not understand Hindi, which is my primary language, I'm just going to switch to the Hindi language for now so that I can chat to the viewers, and also I will explain things in Hindi. But if you don't understand, just stay tuned, and if you're watching a highlight, then you won't even see it. Yeah, thank you so much, and I will continue to speak in Hindi so that I can address the chat, and also I want to explain the chat about what is going on over here. देसी मेक्स, आपका नाम बता सकते हो अगर आप अभी भी हो? मैं कुछ बता सकता हूँ अगर आप अभी भी हो. मे बी आप कुछ ऐसा बनाना चाहो, मतलब आपके वेबसाइट पे है ना, आपकी खुद की वेबसाइट बना के, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ उसमें. अगर आप अभी भी हो तो कमेंट कर देना, फिर मैं बताऊँगा. पता नहीं, आप ऐसा कुछ कर सकते हो अगर मतलब आपको करना है. ऑब्वियसली आपको और क्लाइंट्स वगैरह चाहिए, तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आपका अच्छा खासा चल रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है, करो मस्ती में. अगर नहीं चल रही, कुछ दिक्कत है, तो मतलब बताना. ओके, आई डिडंट सेव द पेज व्हेन आई एडेड द फ्लोटिंग बॉक्स एलिमेंट. आई नीड टू सेव इट. The extend attribute didn't work for this particular thing, but you can always save a preset for this and use the preset, by the way.
लेट्स एग्जिट। कैसा इम्प्रूव करोगे आप? अरे ऑटोमेटिक हुआ है भाई, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, जो भी है ऑटोमेटिक ही है। मतलब बस मैं देखता रहता था ना इंग्लिश में चीज़ें और गाने सुनता रहता था वगैरह वगैरह, अपने आप ही हो गया, फिर कुछ किया नहीं मैंने। नाउ एज यू कैन सी द होवर एलिमेंट इज देयर, सो द पॉपअप एलिमेंट, सो इफ एनीवन वांट्स टू see the full version of the thumbnail, they will be able to do that, which is nice. Although nobody needs the thumbnail to be this big, but I think it's a good option to look at. And I just realized a mistake over here. The blur element that I have added is slightly moved to the right. ये पोर्टफोलियो है, नहीं ये एक्चुअली लैंडिंग पेज बोलते हैं इसको। थैंक्स फॉर द फॉलो, मीन्स अ लॉट। इसको एक लैंडिंग पेज है बेसिकली। मैं यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक बेसिकली इस लिंक में भेजूँगा, और वो लोग अगर इस वेबसाइट में आएंगे तो उनको अगर मान लो थंबनेल ट्राई करना हो या चाहिए होगा मुझसे ना, तो उसके लिए है। अगर मान लो वो आते हैं तो यहीं पे बटन है सबसे पहले तो करने का, और यहाँ पे ओनली 3 स्पोर्ट्स लेफ्ट दिस वीक लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ 3 लोगों की ही थंबनेल बनाऊंगा फ्री में 1 हफ्ते में, तो उसके लिए है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा गया है कि क्यों फ्री में, क्योंकि फ्री देखते ही लोगों को डाउट हो जाएगा कि फ्री में क्यों दे रहा है, तो उसके लिए है। यहाँ पे बस सैम्पल के लिए ये 3 डाले हुए हैं, और भी डालने वाला हूँ। और यहाँ पे बटन्स होंगे अलग अलग निच के लिए। फॉर एग्जांपल अगर गेमिंग थंबनेल ही देखना है किसी को, तो यहाँ पे गेमिंग का बटन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव मान लो, यहाँ डॉक्यूमेंट्री, ऑटोमोटिव, ऐसा बटन्स रहेगा। तो जिसमें लोग क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड 6 आई थिंक बहुत होगा, 3 भी चलेगा वैसे तो, पर मैं 6 करके थंबनेल्स डालूंगा आई थिंक हर निश पे। तो जैसे भी टॉपिक या निश वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे बटन्स के थ्रू, तो उनको 6 थंबनेल दिखाई देगा, जो क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा मेरी कि हाँ अच्छा थंबनेल बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म है जिसको भर के वो लोग मुझसे फ्री का थंबनेल मंगवा सकते हैं बना के, और मैं जेन्युइनली फ्री में देने वाला हूँ। तो जब वो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, अभी भी ये एक्टिवेटेड नहीं है जैसा कि देख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे काम ठीक से नहीं किया है, इस फॉर्म में थोड़ा सा काम बाकी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर उन लोग यहाँ पे अपना डिटेल भरेंगे, और यहाँ पे जब भी वो सेंड मी फ्री थंबनेल में क्लिक करेंगे तो मेरे को एक ईमेल आ जाएगा, और फिर मैं वहाँ से उनको थंबनेल बना के दूंगा। और उसके बाद का प्लान भी है, तो फ्री में देने के बाद उनको बताऊंगा कि भाई साहब ऐसा है कि प्रीमियम थंबनेल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, डिज़ाइन वायरल थंबनेल्स इन 5 मिनट्स। और यहाँ पे टेम्पलेट है, तो यहाँ पे टेम्पलेट वाला डालूंगा। ये पेज अभी रेडी नहीं है, यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही चीज़ें डाल के रखी है, बनाऊंगा इसको। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स बेचूंगा जैसे एडोबी वगैरह का होता है वैसे ही। और इस वाले पेज में पेड थंबनेल्स का लिंक रहेगा, तो वहाँ से मैं लोगों को जब उनको थंबनेल दे रहा हूँ उनको बता रहा हूँ कि ये रहा आपका थंबनेल, तब मैं उनको इस पेज में भेजूँगा जहाँ पे पेड थंबनेल का प्लान वगैरह रहेगा, और लोग सेलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। तो वही प्लान है, तो कस्टमर बनाने का प्लान है और कुछ नहीं है। फोटोशॉप यूज़ करते हो? फोटोशॉप नहीं करता, क्योंकि मेरा प्लान वैसे तो है मेरे पास फोटोशॉप, ठीक है, दिखाता हूँ आई थिंक। इसको 1 मिनट बंद करते हैं, वो मैं रीज़न भी समझाऊंगा आई थिंक, क्योंकि तुम शायद यही कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तुम्हारे बात से ऐसा लगा मुझे, तो आई थिंक तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, तो मैं शेयर करता हूँ चीज़ें। तो जैसे कि देख सकते हो फोटोशॉप है मेरे पास, ये रहा है ना, और यूज़ कर सकता हूँ मैं, पर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। उसका रीज़न सिंपल है कि एफिनिटी करके एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री है और ऑलमोस्ट फोटोशॉप जैसा ही है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये सबके पास होता है, तो अगर मैं इससे थंबनेल्स बनाऊंगा तो लोगों को सेल करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, उनको छोड़ के जिनको फोटोशॉप ही चाहिए, पर उनके लिए भी जैसे यहाँ पे अगर मैं थंबनेल में जाता हूँ, तो ये थंबनेल जैसे हमने बनाया था, अभी आप यही थंबनेल देख रहे हो एक्चुअली। तो अगर मैं यहाँ पे भी एक्सपोर्ट में जाऊँ तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है मुझको कि PSD यानी कि फ़ोटोशॉप वाले फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, और उनको फ़ोटोशॉप फॉर्मेट दे सकता हूँ। तो उस तरह से भी काम किया जा सकता है। तो इससे होगा क्या कि
एक तो मैं ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाऊँगा क्योंकि मैं फ्री सॉफ्टवेयर में बना रहा हूँ, तो वो लोग खुद डाउनलोड करके खुद मॉडिफाई कर सकते हैं अपना थंबनेल। तो मैं उनको थंबनेल दे दिया मान लो, और वो लोग चाहते हैं कि मैं इसी थंबनेल, एक ही थंबनेल को थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके हमेशा के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, करो। तो इस तरह से मैं ज़्यादा कस्टमर ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ऑप्शन है, ठीक है। पर मान लो कोई डीवी, जो कि अभी मैं वेबसाइट बिल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी के लिए सिर्फ ट्यूटोरियल्स ही बनाता है, तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो हर बार मतलब यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देगा या थोड़ा बहुत पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर देगा, तो उसके लिए उसको बार बार मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही सिस्टम मैंने बना रखा है ताकि हर कोई फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे, एफिनिटी, और उसके बाद मेरा थंबनेल का जो मैंने उसको उनको दिया हुआ रहेगा टेम्पलेट, उसको वो लोग मॉडिफाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार के खर्चे में उनका ज़िंदगी भर का चलता रहेगा मतलब। तो प्लान वो है, और एक प्लान तो ये है, और दूसरा प्लान जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था वेबसाइट को दिखाते वक्त, कि मैं सेल भी करने वाला हूँ टेम्पलेट्स। तो सेल करने में भी सेम लॉजिक है। जैसे अगर मैं फोटोशॉप का टेम्पलेट सेल करूँ, ठीक है, तो उसका पीएचडी यूज़ होगा तो एफिनिटी में भी चलेगा, सेम दोनों में कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कुछ चीज़ें शायद ना हो, कुछ चीज़ें हो, ऐसा ऐसा दिक्कत हो सकता है, तो वो पहले तुमको देखना पड़ेगा। पर ज़्यादातर चीज़ें हो जानी चाहिए, दोनों में ही ऑप्शन है। तो ठीक है, हो गया वो। और क्या बता रहा था, हाँ, तो थंबनेल टेम्पलेट्स भी सेल करने का प्लान है, जैसे मैंने बताया। अभी होम पेज पे तो है, वैसे ये सिर्फ अभी मैंने ऐसे टेस्ट के लिए डाल रखा है, एक्चुअल में थंबनेल टेम्पलेट है नहीं यहाँ पे। जैसे यूट्यूब थंबनेल टेम्पलेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है और ये भी सेल करने का प्लान है। तो अभी यहाँ 911 रुपये लिखा हुआ है, बट मैं इतना नहीं रखूँगा ऑब्वियसली, मे बी 300 400 समथिंग लाइक दैट, और 500 मे बी मैक्सिमम। तो ऐसा कुछ प्राइस रहेगा, और लोग फिर उसको ख़रीद पाएंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, वो कार्ट में चला जाएगा, उसके बाद यहाँ से ख़रीद पाएंगे। तो मेरे से वो टेम्पलेट ख़रीद सकते हैं। तो ये भी बेचने के लिए भी मैं सोच के चल रहा हूँ कि अगर मैं फ़ोटोशॉप का ही सिर्फ टेम्पलेट बेचूँ, तो सबके पास फ़ोटोशॉप होता नहीं है, और सब लोग अपना जैक स्पैरो वाला दिमाग लगा के भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा सॉल्यूशन ये है कि मैं फ्री थंबनेल इस्तेमाल करूँगा, फ्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूँगा। तो उससे होगा क्या कि कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो ज़्यादातर लोगों को सेल कर पाऊँगा जो भी टेम्पलेट्स में बनाऊँगा। तो प्लान ये है। तो उस वजह से मैं एफिनिटी पे जाने वाला हूँ। और एडोबी से ऐसे भी मेरा दुश्मनी है थोड़ा, तो वो भी एक रीज़न है। एडोबी नहीं पसंद मुझे, उनका सब्सक्रिप्शन की वजह से, तो वो भी एक रीज़न है। जैसे मेरे पास एफिनिटी फ़ोटो, मैंने पहले जब ये पेड था, एफिनिटी अभी फ्री हुआ है रिसेंटली, पहले ये पेड था, तब मैंने लाइसेंस ख़रीद के इसको चला रहा था, मैं इस्तेमाल कर रहा था। तो हाँ, वही प्लान है। जैसे ये वाला पेज वही उसी को प्रमोट करेगा। अभी तो मैंने वहाँ दिखाया कि कैसे ख़रीद सकते हैं, पर यहाँ पे मैं प्रमोट करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, डिज़ाइन वायरल थंबनेल्स इन 5 मिनट्स नॉट 5 आवर्स। क्यों? क्योंकि मैं आपको टेम्पलेट देने वाला हूँ, टेम्पलेट लो, मस्त बनाओ। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लिंक भी रहेगा, जो सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल वगैरह करने वाला हूँ। तो फ्री सॉफ्टवेयर भी हो, चाहे पेड सॉफ्टवेयर है, जो भी हो। और एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको पता है तो उसके थ्रू भी मैं कमाता हूँ। तो जैसे कैनवा फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से कोई ये क्लिक करके कैनवा खरीदता है तो मुझे कमीशंस मिलते हैं। तो इम्प्रूव चाहिए, हाँ, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। मैंने अभी अगर आप स्ट्रीम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना, आई थिंक 6-7 ही थंबनेल बनाए हैं अभी तक मैं पूरा टोटल। जैसे नहीं देख रहे हो, फिर फ्रंट में 3 ही है थंबनेल, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है, ज़्यादा टाइम के साथ कर लूँगा। तो वही है। और यहाँ पे सेल करने का प्लान है कि थंबनेल सेल करूँगा यहाँ से, तो ये भी टेम्पलेट सेल करूँगा, तो इसका भी प्लान है। और ऐसे ही मतलब इसी रीज़न से मैं मतलब वो बना रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, फ्री सॉफ्टवेयर में बना रहा हूँ। नहीं तो फिर पेड में ही बना लेता फोटोशॉप, जो लोगों को थोड़ा वो लगता है, प्रोफेशनल लगता है। और फिर सिर्फ उसके लिए नहीं है, जैसे फिर मैं ये वर्डप्रेस का टेम्पलेट है, जो ये थीम बना रहा हूँ, ये भी बेचूंगा। ये लैंडिंग पेज जो बनाया मैंने अभी, उसको भी सेल करूँगा। तो उस तरह का प्लान है। जैसे ये टेम्पलेट है जो मैंने पहले वेबसाइट के लिए बना रखी है, तो ये भी लोग खरीद सकते हैं। ये वाला तो ऑलरेडी रेडी है बेचने के लिए। तो वैसे ही बहुत सारे बनाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टच पोर्टल का आइकन वगैरह होगा, बैकग्राउंड वगैरह होगा। तो वैसे ही डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ें बना के सेल करूँगा। अभी जैसे ये पेज है, मान लो ये पेज, तो किसी उसको सेल कर सकता हूँ मैं, थंबनेल डिज़ाइनर को,
कि अगर आपको अपना वेबसाइट में ये पेज डालना है, खरीद लो, डालो, मस्त, खाली इमेज वगैरह बदल दो, टेक्स्ट वगैरह बदल दो, जो भी आपका डालना है यहाँ पे वो डाल दो, बस हो गया, बात खत्म। तो ऐसा कुछ प्लान है, इसलिए फ्री सॉफ्टवेयर, ताकि मैं सबको सेल कर पाऊँ। अगर सिर्फ फोटोशॉप पे करूँ तो ज़्यादा लोग को सेल नहीं कर पाएंगे, वो दिक्कत है। मैं थोड़ी देर के लिए बिल्ड करता हूँ और मैं एक बार वही देखूँगा कि मैंने कितने थंबनेल स्ट्रीम्स करे हैं अभी तक। वैसे करने वाला हूँ और भी मज़ा आएगा उसमें भी। मैं खुद भी सीख रहा हूँ और ये सॉफ्टवेयर भी मैंने मतलब कितने ही दिन हुआ होगा यूज़ करने, पता नहीं, रिसेंटली लॉन्च हुआ था तो 3-4 दिन ही हुआ होगा। लाइव स्ट्रीम क्या, तो हमने शुरू किया था गेम में ही ज़्यादा चल रहा था। ये रहा पहला दिन, हाँ वही पहला दिन है, क्योंकि उससे पहले एफिनिटी फ़ोटो थी। 1 2 3 4 5 दिन हुआ है मेरा थंबनेल क्रिएट करना और ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना। तो अभी टाइम लगेगा और सीख ही रहा हूँ, और धीरे धीरे हो जाएगी जो भी होना है। और एक लिमिट तक ही सीखना है, ऐसा प्रीमियम मुझे मतलब कोई प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइनर नहीं बनना, ये एक्सपेरिमेंट है बस। उसको ख़त्म करने के बाद मेरा काम हो गया, उसके बाद मैं किसी और को हायर करके उनको दे दूंगा कि करो, वो लोग बनाएंगे, बट मेरे वेबसाइट पे सेल होगी, मैं कमाऊँगा, वो भी उनको भी ऑब्वियसली मिलेगा। बट प्लान वैसा कुछ है। स्टार्टिंग के लिए मैं खुद करना चाहता हूँ ताकि समझ में आए कि कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है ना। और पहले से ही किसी को पैसा देना भी वो थोड़ा अजीब लगेगा, तो वो भी एक रीज़न है। तो पहले मैं खुद ही समझना चाहता हूँ सारी प्रोसेस वगैरह, तो उसके बाद एक बार जब मुझे लगा कि ओके मुझे एनफ आता है, अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर दे दूँगा कि लो करो करके किसी को। अब वो लोग बनाएंगे, वो लोग टेम्पलेट्स वगैरह डालेंगे, सेल मेरे वेबसाइट से होगी, मेरे वजह से होगी, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, प्रमोट करता रहूँगा, और बस बिजनेस, यही प्लान है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं जो करता हूँ वही कंटिन्यू करूँगा, मेरा कुछ नहीं है, मेरा बिजनेस ही है, मैं बिजनेस ही कंटिन्यू करूँगा। वो बिजनेस किस चीज़ का होगा, किस किस सेक्टर में होगा, वो चेंज हो सकता है, पर करना वही है। ऐसा इससे पहले मेरा ब्लॉगिंग और अफिलिएट मार्केटिंग से ही सिर्फ पैसे आ रहे थे। अभी मैं ये फ्रीलांस सर्विस, एजेंसी टाइप सर्विस भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करने वाला हूँ बस। जैसे इससे पहले सारे पैसे इस वेबसाइट से आ रहे थे, bloggerself.com। तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल वगैरह है। अभी AI वगैरह के चक्कर में मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा चेंज करके दूसरे फॉर्मेट में भी आ रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे भी यहाँ से जाने की वैसी कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं। तो इसको मैं धीरे धीरे करके कम करता जाऊँगा और सर्विस बिजनेस पे थोड़ा बहुत फोकस करूँगा, और बाद में प्रोडक्ट बिजनेस, जैसे अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, पहले डिजिटल एसेट्स से स्टार्ट करेंगे, एंड फ्यूचर में हो सकता है कि फिजिकल एसेट्स में भी घुसे। फिजिकल एसेट्स के चांस कम है, पर मुझे कोई मैन्युफैक्चरर वगैरह का कोई पता नहीं है अभी फ़िलहाल, और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सीखना पड़ेगा पहले तो उनके बारे में, प्लांट वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह है ना, तो सब पता करना पड़ेगा पहले तो अगर वहाँ पे जाना है तो। इसलिए पहले डिजिटल एसेट्स से ही स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या चलता है नहीं चलता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वर्डप्रेस टेम्पलेट्स, थंबनेल डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, ये सब सेल करना है, एसेट पैक सेल करना है, तो ये सब प्रोडक्ट रहेगा। और सर्विस में भी सेम, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब स्ट्रैटेजी, जिसमें थंबनेल, टाइटल, वो सब रहेगा, पैकेजिंग, कंप्लीट वीडियो पैकेजिंग भी रहेगा, यूट्यूब मैनेजिंग, ऐसा कुछ चीज़ें। तो हाँ, थोड़े थोड़े करके बढ़ाते रहेंगे, बट स्टार्टिंग के लिए मैं थंबनेल चुन रहा हूँ। और वेब डिज़ाइन और ये तो मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि ये मैं सालों से करे आ रहा हूँ, तो ये मैं पहले दिन से ही कर सकता हूँ, बस अभी मूड नहीं है करने का। अभी थंबनेल सीख रहा हूँ तो थंबनेल से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए। और ये वाला मैं कभी भी शुरू कर सकता हूँ, वेब डिज़ाइन वाला, क्योंकि मैं वही खुद ही करता हूँ, और ये वेबसाइट भी मैंने खुद ही बनाई है। तो हाँ, और ये पहली वेबसाइट तो है नहीं, मैंने बहुत सारे वेबसाइट बना लिया हैं लाइफ में। तो बस वेबसाइट बना के वो भी सेल करेंगे टेम्पलेट, और वेबसाइट बिल्डिंग का सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। तो यही सब प्लान है। कितना अर्ज कर चुके हो पता नहीं अभी में, लेकिन मेरा वो AI वाला चक्कर में ना धंधा मंदा चल रहा है, तो इसीलिए मैं ये सर्विस वाला बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ।
अभी ये सब भी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, नहीं तो पहले ये स्कूल के टाइम पे करता था मैं फ्रीलांसर, अभी उसके बाद तो मैं करा ही नहीं है कभी लाइफ में। जब स्कूल में था, मे बी 11-12 में जब पढ़ता था तब की बात है, तब फ्रीलांस करता था मैं। या पैसा वैसे की बात नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है। बहुत है, जाके देखो ना यूट्यूब में, दुनिया भर का है, सबका अपना अपना होता है। पर हाँ, मैं मतलब ऐसे फालतू के वो एडवाइस नहीं देना चाहता कि लखपति बन जाओ वगैरह। ओके बाय ब्रो। हाँ ठीक है, मेरे को भी वेबसाइट पे ही काम करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग बाय द वे। सब्सक्राइब कर लेना अगर दोबारा देखना है तो। थैंक यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ वेबसाइट के लिए। Okay, now let's get back to the website building, and for that I will need to open at least one more window where I have all my plans that I will be using, which is here. And that is why I was struggling to talk about things, because all my plans are here and I hadn't opened this particular document. I'll go up and look at the document and then we'll continue from there, which should be easier to manage. Okay, I can unblur now. Although I'm feeling sleepy because I haven't slept yet, so I don't know how long we will be doing this. But like I promised, I am doing it. I did not want to break my promise. Okay. First of all, I need to find how much we have already done, because we have done a lot already. We could work on the other landing pages, for example this one where we will be selling the templates, but for now I think I want to focus on the first thing, which is providing free thumbnails. I think we will focus on the paid version, paid thumbnail surveys, or the template selling for the paid version. I think we will focus on that particular pages later. First I need to start making money from this one. That's the plan. So let's check it out. I think first of all I need to edit the back end of this page. Let's go. And I do need to hide the menu. Because it's a landing page and we don't need a menu over there. Waiting for the page to load. Yeah. So since this is a get your High-CTR. Get your High-CTR YouTube thumbnail for free. I think this title looks better. Although we don't need to think about it a lot, because I don't want this page to be indexed on Google anyway. We will only use it for. By the way, I have the RankMath Pro subscription now. I think I need to continue show you guys that too. I'll create a different tutorial for that one. For now, I'm just adding it, but I don't need it, to be honest. Let's say for YouTube thumbnail would be the keyword. I'm not doing it, but for the sake of this experiment,
I will remove all this. Get your premium for free. Yeah. And for this, free dash YouTube dash thumbnail would be good enough. I will need to write a description. For now, I don't really need to, because it's not going in the search engines anyway. Like I said, I think we are done here. I can just save it. And also I can disable the Divi menu from here as well. Divi dot navigation. Why is it dot navigation? I don't know. Hide nav before scroll. Okay, so we don't have an option over here, but I know how to hide the menu, so we'll talk about that later on. Let's save the page first. Open it. So our page is ready and should be ready for use. Free YouTube thumbnail, as you can see. I need to check the forms and stuff though. I haven't tested it. I will test it offline, or at least without showing. So now I'm going in the dashboard and I don't know what things will be there, so give me a moment. Went into the website dashboard. There's nothing, just pages. We'll go to theme builder, and now I can show you guys. So this is the thing. I have already created this one, as you can see, a template for the landing pages, where I have disabled the header completely. As you can see, I just have to select that page that we have created now, and then it will start. It will happen. And the footer is the same thing, the same footer that we have used over there, but it will be different, and I will customize it later on. For now, I think I need to keep it the same. It's to save time so that we can like move forward, and that's the only reason. I'll go to specific pages over here, and then I will choose our page, which was this free YouTube thumbnail page. I'll also select this one. I haven't started working on that one, but still we will be working on that one, so let's select it anyway. Yeah, so done. We'll now save it. Done. We'll save the changes over here. So now if I open this page, the menu should be gone, the top menu. Okay, it's gone. So now it's a landing page. People will land over here. They will choose the button. Okay, I haven't added the anchor link to this form still. I need to work on that. I forget things. I only accept channels that. Okay, this is important, but not that important. I do, like I said, I do need to add some more thumbnail options over here, and then the plan is to, okay, I think we can work on this still, to be honest. But I look at the plans that I have, and if I don't have anything to do at the moment, then we'll do that. Okay, otherwise we'll move on. And it's showing the title tooltip. I need to disable it. I don't want that to happen. I think it's from the rank with plugin. I think I just need to change it to alt text only, and it will be fixed. And I will kind of create gallery item over here to show 6 thumbnails instead of 3. Let's say if it's a row, I think it is. Yeah, it is a row. We can simply duplicate the column. We'll go to this. We will
Okay, maybe not like this. I do have an idea. Loop. I think it will on loop the 3 element. Yeah, I need to select one and then create the loop. So one column. We select one of the columns, then create the loop. Okay. For this to work, we need custom post type, which we can create using ACF. So that's one of my plan that I will be trying later on. For now, we'll stick with the general template over here, the column. But later on, I do want to create automated system where the thumbnails will be updated automatically as I will create new thumbnails. And for everything. So like for example, like I said, there will be buttons to choose the niche or the topic of the thumbnail, and they will click on that button and the thumbnails will be displayed in this particular section, at least 6 of them. And I also plan to add a button to click to see a completely dedicated portfolio for that particular niche. So that's the plan. For now, let's select this element over here. We need attribute. Flash. I don't remember the name, but anchor. I think it's just a stack form. Should work. I think it is just a stack form. Yeah. Let's exit. For some reason it's not working well. It should show me that, okay, this thing, and maybe it was showing it, I didn't see it maybe. Stack form didn't work. I need to fix this, but the idea is there. Or have I forgotten how to create anchor links? I don't think so. Okay, ID section name. Okay, it should be ID, not class. That's what my mistake was. And yes, I have forgotten how to create anchor link. Not really, because we did this with the homepage, but for some reason I wasn't thinking well, I think, at the moment. We did it like yesterday or in the last stream. So I did remember it. I don't know why I got confused on this one. Would be ID. And do we need a custom attribute? I don't think so. Or maybe we leave. Yeah, maybe we do. I was thinking maybe there is an option already. Okay, this was working, yes. I just didn't notice it. The button. So yeah, as you can see, the form went down. We went down to the form. So that was the plan. Then people will fill up the form, submit it, and my work will begin. So that's the plan of this page. Let's read through my plan and see what we will be doing next. I do need to add more thumbnails. I do have more thumbnails. Should we look it up? We should be using grid over here instead of flex. That's also one of the idea, by the way, if you are doing something like this. What was I trying to do? Okay. Just because I don't know
how many of images are there and what sort of images are there. I don't wanna show you guys things that you may not wanna see. Layout, I'm changing it to grid. Collapse empty columns is useful, but in my case it won't be because we are doing it manually. I'll be adding 6 of them. Alright. What happens now if I... Okay, I'm still blurring, sorry. So I added one more section just now. Selected row, then grid, equal column width, column size would be 3. Yeah, so grid would be more helpful in this case. Collapse empty columns makes sense to enable it just in case, but we don't need it actually. Let's keep it default because we are adding 6 of them anyway. So I guess let's duplicate it first and then Ctrl+Shift+D should be the button. Okay, so now I have 6 of them and it's too close in terms of design. I need to add the gap a little bit. That's fine. Vertical gap. Let's do it EM. Keep it consistent. I think 1.5 EM would be nice. EM is something new for me. I am using EM unit like after a very long time. Column width, so there is a horizontal gap. This is what I was looking for. It's at the top. Yeah, I think this is better. We could reduce the horizontal gap, but I think it's okay. And we can create the box shadow over effect for everything if you want. And in this case we don't need it for the column, we can create it for the image. Right now I don't have the preset for this image element, so I need to create it before I can apply it. But for column I think we have it. Yeah, but it also has the box things and stuff. The idea is same. I'll just copy the preset and use it. Now I'll just switch to some more thumbnails. If there is more thumbnails to be added, I'll add them and then we'll move forward. Okay. Yeah, I do have more thumbnails. Automotive. I'm also changing the alt text. Thumbnail sample 1. Actually, there's nothing I can show you guys. I thought maybe there's something sensitive. Automatic thumbnail sample 1. General, informative.
plus tutorial sample. Then informative slash demo slash tutorial sample. 1. Now we have one gaming thumbnail over here. I don't need to add more, obviously. Gaming thumbnail sample 1. I don't think it's good, this one, but I do have one which I need to edit a little bit more before we can add that one to here in this page. For now we'll make do with what we have. General informative slash demo slash review slash, और क्या हो सकता है? ये मैं बस ऐसे ही डाल रहा हूँ टैग्स के लिए, वैसे जरूरी नहीं है। I think इतना ही काफी है। Sample 1, sorry 2 होगा अब ये। Third। अब यहाँ है तो बहुत सारे, बट ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड फील हो रही है, पर यहाँ पे मैंने ज़्यादा काम किया नहीं है। ये डाल देता हूँ। तो ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा हमें, बड़े बड़े थंबनेल्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम उसको ऐड कर पाएँ। अभी मैंने करा नहीं है, ज़्यादा थंबनेल्स बनाए नहीं है, तो इसलिए थंबनेल वाली स्ट्रीम भी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अगर वो सब देखना है ज्वाइन जरूर कर लियो। ठीक है, ये वाली ऐड कर लेते हैं। गेमिंग थंबनेल सैम्पल 2। सैम्पल में बार बार गलत टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, मेक श्योर करते हैं कि सारे लाइट बॉक्स इनेबल्ड है। यस, सब में इनेबल्ड है। तो ये हमारा 6 थंबनेल सैम्पल्स हो गया। फॉर्म काम कर रहा है या नहीं ये चेक करना है, और फॉर्म एलिमेंट भी थोड़ा सा एक्चुअली मॉडिफाई करना था, अभी मुझे जस्ट याद आया। यहाँ पे मॉडिफाई मुझे बस ये करना है कि ये टेक्स्ट जो है वो बहुत बड़े हैं फ़ोन के लिए, तो मुझे टेक्स्ट बस चेंज करना है और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। यूट्यूब चैनल लिंक वैसे तो छोटा है, बट यूट्यूब लिंक कर देता है इसको। वो वीडियो लिंक भी हो सकती है, चैनल लिंक भी हो सकती है। और हाँ, रिक्वायर्ड फील्ड में मुझे, वैसे तो मैं पहले सोचा था कि कलर वलर कर दे क्या, फिर सोचा कि नहीं, कि फिर मैंने सोचा कि सटल सा रखते हैं कुछ, जैसे स्टार डाल दूंगा सिर्फ और कुछ नहीं करूँगा, कि मैंने रेड कलर करना ट्राई किया, अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैं रिक्वायर्ड में बस ये स्टार लगा दूंगा। पता चल जाता है उससे, क्योंकि लगभग सारे फॉर्म्स ऐसे ही होता है, स्टार लगा हुआ रहता है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वायर्ड फील्ड में बस ये स्टार ऐड कर दे रहा हूँ कि पता हो कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। फॉर्म भरते वक्त यूट्यूब लिंक भी रिक्वायर्ड है, एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, है क्या? हाँ, रिक्वायर्ड ही है, ज़रूरी तो नहीं है वैसे, पर उसका रीज़न है कि मैंने रिक्वायर्ड क्यों रखा है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों पे काम नहीं करना चाहता जो मतलब
एक्चुअली में वीडियो डाल ही नहीं रहे और मुझसे प्रीमियम थंबनेल बनवा रहे हैं एक ही तो, है ना। मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ रूल में मेंशन है, मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 वीडियोस अपलोडेड हो उनके चैनल पे, और थोड़े सीरियस लोग को ही लेना चाहता हूँ मैं, इसलिए है बस वो। वीडियो टाइटल स्लैश टॉपिक, इसको हम सीधे टाइटल स्लैश टॉपिक कर सकते हैं छोटा करने के लिए। ईमेल एड्रेस में भी सिर्फ ईमेल काफ़ी था वैसे। लिंक टू ब्रांड एसेट्स, ये बहुत लंबा है। यहाँ पे मैं हेडशॉट कटआउट ये सब डालना चाहता था, तो ये डेस्कटॉप में तो ठीक ही लग रहा है, पता नहीं यहाँ पे क्या टाइटल। अच्छा मैं ये एडिट कर सकता हूँ तीनों के लिए, आई थिंक फ़ोन के लिए भी। ये मैंने सोचा नहीं था, तो अब हमारा प्लान चेंज हो गया एक्चुअली क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमें सारे डिवाइस के लिए अलग अलग करने को मिल रहे हैं। अब जब ऑप्शन है तो करते हैं। यूट्यूब लिंक, हम बस रिस्पॉन्सिव एडिटर को ओपन करेंगे डेस्कटॉप में, यूट्यूब चैनल स्लैश वीडियो लिंक। टैबलेट में भी ठीक ही लग रहा है, तो हम चेंज नहीं करेंगे, बस फ़ोन में चेंज करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा दिखा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं थिंक मेरे फ़ोन में तो लोड हुई थी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने फ़ोन में, वो लोड नहीं होती है पूरा टेक्स्ट। ये भी एक चीज़ है बाय द वे। अरे मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, आप पता नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं, अब बोल ही रहा हूँ तो। And the page link in the front home page is broken now. I need to fix that. It was dynamic if I remember correctly. I think it didn't change with the URL change. Free thumbnail, free YouTube thumbnail, right? I've manually entered the page. The homepage link is broken. Need to fix it. And the heading text is not even visible on my phone for some reason. Okay, it loaded later on. That's not a good sign, but I will fix it afterwards. Okay, it is visible actually. The only two below them were invisible or cutting out. So this is fine. We go to this next field, title slash topic. This is also fine, but and we don't need to edit it, but let's go back to this version first. Video title last topic. This one we need to work on. Link to brand assets, address, headshot, cutout, logo, etc.
कलर्स आई थिंक नहीं समझ पाएंगे लोग, कंफ्यूज नहीं करते हैं। मतलब कलर पैलेट चुन के लोग टेम्पलेट बना के रखते हैं ना, उसके लिए लिख रहा था। लिंक टू ब्रांड एसेट्स, हेडशॉट कटआउट, लोगो एक्सेट्रा। ठीक है, टैबलेट पे ये अच्छा नहीं दिख रहा था आई थिंक। अभी मैं टैबलेट में चेक नहीं कर सकता, वो मैं स्ट्रीम कंट्रोल करने के लिए डाला हुआ हूँ, तो इसको मैं देखूंगा बाद में। फ़ोन में कटता है। लिंक टू एसेट्स करते हैं, इसको छोटा रखते हैं। ये मैंने ऑप्शनल रखा है, अगर कोई एसेट्स नहीं देंगे तो हम सिर्फ इमेजेस यूज करेंगे आई थिंक, मुझे याद नहीं है। आई थिंक ऑप्शनल रखा है, हाँ। नहीं, रिक्वायर्ड फील्ड है तो यार, क्यों पता नहीं, याद नहीं है क्यों रखा हुआ है मैंने रिक्वायर्ड फील्ड। आई थिंक वो ऑप्शनल है, करनी चाहिए एटलीस्ट। हाँ, सबको हेडशॉट वगैरह नहीं चाहिए होती है, ये ऑप्शनल कर देंगे इस फील्ड को। Link to inspiration / style you want is fine. बस मोबाइल में एडिट करेंगे फिर से। यहाँ पे ठीक ही दिख रही है फिर से, बट मेरे फ़ोन में अच्छी नहीं दिख रही थी, कट रही थी थोड़ी बहुत, कट रही है। Inspiration link, copy inspiration link, लोग समझेंगे। style / inspiration link, आई थिंक इतना में समझ जाएंगे। और ये तो खाली है, मतलब बड़ा वो है बॉक्स है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये भी ऑप्शनल होना चाहिए, रिक्वायर्ड है। हाँ, ओके। If you have any specific instruction, do send it here. Required field है और हम डिसेबल भी नहीं कर सकते क्या? ओके, मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, डिसेबल्ड ही है। ओके, सारे हो गए बटन्स को छोड़ के। बटन पर पहले काम कर लेते हैं। Now let's work on the button. Where's the button? Button. Where's the button? This is the button. I just want to work on the font size, I believe. (1.3 EM). I learned about this, by the way, recently. It's minimum, maximum, and the growth rate in between, I think. Let's look at it. Fine on tablet. (1 AM).
1.3. I mean, it's looking good enough to me. It's already in center. But in my phone, it's looking very big for some reason. We'll go with 1 EM. We don't need clamp actually in this case. This is a new CSS property that I just learned about, so I wanted to try. Okay, yeah, let's not do it because I forgot actually. I did see the use of it in the morning or last night. I don't remember exactly when. It seems like I've forgotten it. What just happened? .3. Yeah, I think that's good enough. I do need to make this form fancy a little bit. I haven't done it yet. Go to design. Background color and focus color. On focus, I do want the background to change a little bit. Looks good. Although let's go with 50%. They do need shadow, I believe. Outside. They are like almost blending behind the scene. We'll focus text color. It's fine. We'll text settings, spacing, everything's fine already. To text capture text. Button is fine. Sizing, spacing, box dash shadow. I won't go beyond 1 pixel. I just want it to be subtle. Yeah, something like this. I want the form to be visible, stand out a little bit, but don't want to make it too obvious about the border. Okay, this color is literally hiding. We need maybe this one with lower opacity. It is too low, but it is now highlighted a little bit. The form fills. 50 is more than okay.
And it looks good on focus as well. Should be fine. Give me a moment. How long we have been streaming already? I'll look in my YouTube stream time. Where's the stream time? Okay, 1:43. The interface has changed a little bit, so I didn't know. We got 79 views, so we did get a lot of viewers today for some reason. But they went after 10:25 AM. 1:43. Okay, I'll continue. Where were we? On the landing page, right? Which one? This one. Okay, let's get going. So the form fields are also ready with outer shadow added, and they're working. I need to look at our ideas again. I have to do anything else. Now I have to fill up the form and send it to test that it is working. Save and exit. Now also need to work on my home page. It was a dynamic link if I remember correctly, but for some reason it's not working at the moment. But it was a dynamic link if I remember correctly. So the link should have changed when I changed the actual link. Service. Why they are all saying service 1? Service 2. Link. What? This one. Okay, the column link, I think I forgot to edit or something, or maybe we did the extend attribute thing and I didn't check it. Thankfully now I have realized it. It was my mistake. I just didn't realize that I made this mistake. Right now. Same thing I also want to apply to the page link on the button. For some reason they are not allowing me to see the link. They should do that. And for growth strategy, or the third column, let's just start contact page for the moment. But I'll change it to the dedicated page, to a contact form, but different kind of contact form, not the basic one. For now though, because I don't have that form that I would create for this particular one, I'll keep it separate. And for this one, it's safe, but I don't have that form at the moment. Anyway, and exit, save and exit.
Now the link should be working. Okay, it's showing homepage again for some reason. This one, the button one, I think I need to change it. This looks fine. Okay, it's still showing the homepage button. Apart from the column one, that one is working. We need to fix this. Each link. This one. Save and exit. Now the link is active. Page is also active. I'll just test the email system in the backend. Just filling up the form, trying to be as realistic as possible. Obviously I won't do the complete thing, but at least trying to be a little bit the way it would be normally. Okay, sending the message. I will also create a redirection page. I don't think I have enabled it at the moment. Yeah, so it simply says this now, but I will create a dedicated thank you page later on. Tell me what I will do, and then the form disappeared and it says thank you, I'll get back to you as soon as it's ready. But I won't do this, it's just for now. I will redirect the user to a different page, the paid one or the template one after this. I will have to think about it, strategize a little bit before we can move on. So yeah, I did send the email. Now it's time to check it if it's working. Message from PayPal. Need to look at it later on. It's probably about the payment that I was talking about. Yeah, it is working. The problem is I did not get anything else. Just the message part. I think I have to assign all the fields to my ConvertKit form for it to work, because not ConvertKit, it's called Kit now. Yeah, that's the tool we are using at the moment. Okay, I'll have a look at it. But the form is ready, form is working, so that's a good sign. Form is ready and it is working.
I only got the part where the message section was, the rest were lost in the email. And I'm guessing that's because of the element. I have seen that option somewhere. Field. Just don't remember where. I don't know why, but the other fields didn't work. At the moment, I don't know. I thought probably maybe I need to link them to my ConvertKit account or something, because that's the account we used to send the email. Okay, not sure what will be there. Put the email address where the message should be sent. Not email spam prevention or complex process. We recommend using. Okay. So just creating the form isn't enough. Let's say we will send the form to this email address. We can add some dynamic element, custom field. That's too much. How do I include the fields in the form? It should be like auto included. The normally form works like that. Form elements work like that. Yeah. I think I have to ask the customer support about this, or there might be some documentation that I need to look at before I identify this. I did find the email option. I think we need to manually edit it. I just don't know how to include the field elements yet. Okay, I found it. Just click on the I button, info button, and it will show all the variables that you can add. Then we can define the custom pattern for the email address. First should be included in the following format: field underscore ID. For example, we can, okay, yeah, got it. Field underscore ID, got it. Okay, so we will be entering all the field IDs. I need to quickly check. Name is name. Email is email. Channel link is YouTube link. Topic is topic. I think we should keep it title.
Title. Let's go with video title instead. Video title. I'm just editing the IDs. I think I can show this. I'm just editing the field IDs so that I can remember them easily. And also because I created all the field IDs by duplicating the fields, so they are all the same thing, name, which I'm changing to asset link, assets link, assets link. Duration is too long, so style link. And message. Message was added automatically even when we didn't add it. Again, I will have to blur it because sensitive stuff. Please create the, just so that I don't mistake it, please create the free thumbnails for me. For some reason it's not allowing us to edit the subject line as well. It should have, but it's okay. Name equals name, okay. Email equals email, YouTube link, YouTube link. I'm just creating the email with the variables that will be sent once the form is submitted, just in case you are wondering. Style inspiration link. Style link. Out of laziness, I chose style link instead of inspiration link. Assets link. I'm just entering the variables. And the last one was message. Extra instructions. Message. Okay, our email is ready. I just need to confirm the message element once, the field option. Okay, I was correct. So now I'll exit and save and exit. I just saved a message in the element. Now I'll fill the form again and send something and then test again.
Okay, send. I'll also need to create the landing page later on. Sorry, thank you page, where we will be redirecting the form fillers. So I just submitted the form again, and now I'll check my email where the email will be delivered. Search. Yeah, now it's working. Okay, our form is ready. And it's working. Next would be a thank you page. I think next we should work on that, because I want this page to be fully functional, and then we will work on the other stuff. I do need to work on thumbnails as well. These are like very old thumbnails that when I didn't know, and I have created them with Canva, I think, basic software. I also need to work on thumbnails. I think we'll keep it up to here. I think that would be it for today, but let's look at the idea again before we decide to end it, because there might be something. Next would be a manual email that I will be sending, because I want to customize it and make it personal. That was the plan. Next page was the templates page that I wanted to make. We will do this one later. Before that, we need to make templates first, a lot of them, and we can do that by doing the thumbnail streams more. This page, by the way, I will be selling all the Divi templates as well, so there you go. If you need them, it will be available throughout my website and other handles like donation or gift pages as well, such as buy me a coffee page, Patreon, or fourth wall. shop.bmahali.com is fourth wall. It will be added there as well. The reason I have chosen it as a platform as well is because these products can be tagged on my YouTube channel to sell them easily. That is the reason. I will be adding the product over here as well. These are the same products, by the way, but I think the lowest amount that I can add here is $5, I think. I don't remember, but yeah, I think I will add the templates over this or over on this website as well. Next one is that idea. Okay, all are looking like it's about the templates page now. Divi is it. Then there's outreach emails that I have written, Discord messages, tweets and stuff.
Then I have plans for freelance platforms. I need to update those gigs. Then I have the growth landing page idea. About page, we have already added the text. I just need to design it, and we'll create the timeline design there with pictures of me throughout the timeline, if I have them, that is. Otherwise, screenshots and stuff of videos or work, some sort of work, even the website, maybe website snapshot, the old ones. All about homepage and about me page. And we have planned for services sections. I need to check if I've already done these things. Yeah, I've already added the text section called create a corner, the YouTube section. By the way, this is why I have added the text and stuff already, so that next time when we will try to make this page or the next page, we will be quick. That's why I've already added the text and elements before we actually try to make the page, to avoid this situation where I'm just talking about stuff and doing nothing, looking at the stuff, the ideas that I have. Top section, nobody. Okay, added this already. Then we have the heading, plan for the growth page. Yeah, it's the dedicated landing page for the growth section. Then फिर add me button, उस पर भी काम हो गया है. ये फ्री थंबनेल पेज जो हमने ये बना रखी है उसका आइडिया है. उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सब लिख के नोट्स वगैरह बना के थोड़ा ड्राइंग वगैरह करके रखा हुआ है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज डिटेल्स है तो ये मैं नहीं दिखा पा रहा. बहुत सारे ईमेल्स वगैरह है, पर्सनल डिटेल्स है. कॉपी स्मॉल टेक्स्ट. फिर मैंने थोड़ा, क्योंकि मैंने जब पहली बार लिखा था तो जल्दी में लिखा था, तो फिर मैंने उसको चेंज करके थोड़ा बेटर ऑप्शंस भी रेडी करा था. जैसे इसी पेज के लिए है, देख लेता हूँ कि मैंने चेंज कर दिया है या नहीं. पोर्टफोलियो अक्रॉस वेरियस नेचर्स, या ठीक है, कर दिया है अपडेट. ऑटो रिस्पॉन्ड और ईमेल ये क्रिएट करना है. नहीं, एक्चुअली मैं मैनुअल करूँगा इसका. थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर मैनुअल रिप्लाई करूँगा तो पूरा चैनल उनका देखूँगा. और मैं एक्चुअल प्लान ये है कि मैं उनको टाइटल वगैरह भी सजेस्ट करूँ, या एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी ही दूँ डायरेक्टली, सिर्फ थंबनेल देने के बजाय.
visual layout crucial. So this page is ठीक है। उसके बाद हम फिर इसी पेज की बात कर रहे हैं। ओके, हो गया सब कुछ। ओके, ऑल डन। आई थिंक कल ही करते हैं, मेरे को भूख भी लग रही है, नींद भी लग रही है, सोया नहीं हूँ। इतना काफ़ी है आज के लिए। तो आई थिंक नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आई थिंक हम एक्स्ट्रा थंबनेल्स बनाएंगे, क्योंकि ये सारे मुझे नहीं पसंद उतने नीचे के। ये भी ठीक ठाक ही है, बट इसको मैं इम्प्रूव करूँगा। इसमें एक्चुअली काम कर रहा था, फिर वो हो गया, डेडलाइन सामने आ गया था, तो फिर मुझे फटाफट इसको देना पड़ा मजबूरन, जैसा कहा तैसा डालना पड़ा। ये टाइटल एलिमेंट डिवी से आ रहा है, मुझे पहले लगा था रैंक मैथ से आ रहा है, तो मैंने चेंज किया था। टूल टिप, इसको मैं डिसेबल करने का भी देखूँगा कहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो हो। अगर हो, या फिर टेक्स्ट बेटर लिख देंगे अगर नहीं हटा पाए तो। ठीक है, ये पेज तो रेडी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे वो सोच रहा हूँ मैं। हाँ, थंबनेल बनाएंगे ताकि हम यहाँ पर डाल सकें बेटर थंबनेल्स यहाँ। हाँ, जब मैं थंबनेल्स बना लूँगा ना, तो फिर हम निश पे डेडिकेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बटन्स डालेंगे, और बटन पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे थंबनेल्स अपडेट होने चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक या निश के लिए, तो वो बनाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट। और उससे पहले मुझे थंबनेल्स चाहिए होंगे। और उसके बाद सेल्स रिलेटेड चीज़ें बनानी है मुझे सारे। हाँ, तो पेज रिलेटेड ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। तो जब मैं ये सेक्शन कंप्लीट कर लूँगा, इस वाला सेक्शन, पहले तो थंबनेल्स बनाऊँगा थोड़ा, जो यहाँ पे हम दिखा पाए, और अलग अलग निश या टॉपिक पे बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेमिंग का 2 है, और एक्चुअली एक मेरे पास और है जो अच्छा खासा थंबनेल है, तो उसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ इसमें, BGMI का। तो 3 थंबनेल हो जाएगा उसके लिए, और हमें 3 बनाना पड़ेगा, 6। और नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव टाइप का डिज़ाइन, ये सब डिज़ाइन वो मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं उसी कैटेगरी पे आता हूँ। ऑटोमोटिव में सिर्फ ये एक है मेरे पास, मुझे और बनाना पड़ेगा, और 5 बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग निश या टॉपिक पे अलग अलग थंबनेल्स बना के, उसके बाद जब रेडी हो जाएंगे तब हम यहाँ पे बटन्स डालेंगे बहुत सारे इस एरिया में। माउस दिख रही है क्या? ओके, दिख रही है। हाँ, तो इस एरिया में बटन्स डालेंगे, और वो बटन्स क्लिक होने पे ये वाला थंबनेल सेक्शन अपडेट होगा, और सिर्फ उसी निश पे दिख रहा होगा। और सबसे पहला बटन होगा फीचर्ड, तो वहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड थंबनेल्स दिखेगा कुछ, जो कि रैंडम होगा। आई थिंक मेरा बेस्ट वर्क वहाँ पे दिखाऊंगा, मैं डिस्प्ले करूँगा। और उसके बाद उसको बस फिल्टर किया हुआ रहेगा कैटेगरी बेस पे, तो बस वही रहने वाला इस पेज पे। और वो रेडी होते ही हमारा बिजनेस वाला प्रोसेस रेडी हो जाना चाहिए। मैं बस उसको फिर बैकएंड पे वो कॉमर्स पे एज अ प्रोडक्ट ऐड करूँगा और सेल करना स्टार्ट कर दूँगा। नहीं, उसके बाद फिर हम जितना भी थंबनेल्स बनाएंगे या सेल करेंगे, ठीक है, एज अ सर्विस या फ्री में जो भी बना के देंगे, फिर उसको हम टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करेंगे। और जब टेम्पलेट हमारा रेडी हो जाएगा तब हम इस पेज पे काम करेंगे, और यहाँ पे हम प्रॉपर थंबनेल टेम्पलेट सेल करने का पेज बनाएंगे। तो ये भी मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, और जितना कुछ भी हो पाएगा दिखाऊंगा। ऑब्वियसली वही प्लान है मेरा इस पूरे सीरीज़ में, कि जितना भी कुछ मैं आप लोगों को ऑनलाइन करके दिखा पाऊँ मैं करके दिखाऊंगा। तो ये पेज भी बनाना है ऑब्वियसली। अभी हमने सिर्फ ऐसे ही लेआउट डाल के रखा है और थोड़ा बहुत टेक्स्ट डाल के रखा है,
और कुछ किया नहीं है इसमें। तो ये पेज भी बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। फिलहाल यही हमारा मेन डिज़ाइन शुरू हो गया और इसको हम पहले पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से जब हमारा काम शुरू हो जाता है धीरे धीरे फिर हम अलग अलग पेजेस बनाने शुरू करेंगे और सारी चीज़ें दिखाऊंगा। इस वेबसाइट का पूरा हर चीज़ जितना भी कुछ बनाऊंगा सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो हाँ वही है। तो अब हमारा ये बस रेडी है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया नेक्स्ट स्टेप, अरे मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ फिर से। Okay, so our design is ready pretty much. What we will be doing next is simply create a section over here which will be some buttons or links, depends what will look better, and then they will act as tabs basically to show the thumbnails from that particular topic or niche that we will be adding in the buttons. And the first one will obviously be featured option, where we will feature 6 of our best thumbnails for without caring about the topic or niche. And then there will be topics or categories, buttons or links over here like gaming, informative, general, documentary, etc, etc. And the thumbnails will be sorted out with that particular category over here. So that's the plan for this page, and then this page will be completed until we will create our product templates. And once we will be done with our product templates, then we will edit this page, and then I will show you the entire process. Obviously, like I said, this is my plan for this website. I will try to show everything that I will make on this website, including all this stuff. And then when this will be ready, we may also work on this page, or maybe actually just after this page, I think when this page will be ready, then we will work on this one. This would be the similar type of page, but in this one we will be creating page for the paid options, for someone who wants to take our services as a paid service basically. So we'll create a paid section over here, paid thumbnail option. This one is free YouTube thumbnail, that would be pro YouTube thumbnail. So yeah, that's the plan. And then we'll also add templates on the website. And then we will edit the template page that I was showing you guys, this one. And once the template page will be ready, we'll come back to this page again, and we will add a section down here for those who don't want to deal with all these things and want to create the thumbnails themselves. A small section just to promote the templates page. Yeah, that's it. I think the templates page, I'll add a shop section at the bottom here just to promote the templates page for some people who would want. And the reason I will not be promoting the paid version over here. Maybe I will, but with only a small link, not prominently. It's because we are targeting the audiences that don't like to pay or don't want to pay, at least in the beginning. So we'll try to keep everything free here, and that's why I will add the option of templates, and most likely I will only show the template packs that would be free down here, and the paid versions will be hidden, or at least so I'll show the only one paid template package and the rest will be free. Let's say we are showing 3 or 4, then let's say 3, then I'll show 2 free template pack and 1 paid template pack. This will be displayed on this page, something like that. I haven't decided completely, but that's the plan, initial plan. And then we'll finally work on this video section. It's not ready yet. I will write a script and record a small video where I will be talking about the entire purpose of this website and what I offer, what to expect on this website basically, and on my YouTube channels or any other platforms. So that would be the video on this section. Yeah, and I also need to edit this image a little bit. I will create something in the background, yeah, to make it look on the phone as well.
it looks like floating without the background image, background color that I've added. Yeah, okay, I'm done for this one at least. We'll work on this again later on. For now, I think I'll say a goodbye. Let's switch to the just chatting scene. Thank you so much for watching. Please make sure to subscribe if you are watching this on YouTube, and make sure to follow if you are watching this on Twitch. Thank you so much, and I hope to see you soon in the next stream. The next one would be a gaming stream, but soon after that we should be creating one more with the website design, or at least the thumbnail design stream. We will be doing one of them at least. So yeah, do join me if you can. Thank you again. It means a lot. Make sure to subscribe, make sure to follow. I'll see you in the next one. I hope you have a lovely time ahead. Yeah, bye for now.